So here we have a question of JEE Advanced 2023. It is the match the list type question. A thin conducting rod Mn of mass 20 gram and length 25 centimeter and resistance 10 ohm is held on a frictionless long perfectly conducting vertical rails as shown in the figure. There is a uniform magnetic field of 4 Tesla directed perpendicular to the plane of rod rail arrangement. The rod is released from rest at t equal to 0 and it moves down along the rail. Assuming air drag is negligible, match each quantity in list first with an appropriate value from list second and choose the correct option. Acceleration due to gravity g10 and e raised to minus 1 is 0.4. यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो है प्योरली मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में ये है कि अगर देखा जाए तो जैसे ही रॉड मूव करेगी, तो रॉड का नाम mn है, तो रॉड मूव कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी, और जैसे ही रॉड मूव करेगी देयर इज द करंट इन दिस स्मॉल लूप हियर, देयर विल बी अ करंट. So due to that current there will be a magnetic force that will oppose the change in magnetic flux and that will work upward, और ये magnetic force oppose करेगा, so the net force हो जाएगा downward. Net force is equal to mg minus fb and fb is nothing but ILB. तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है जिसमें 0.2 सेकेंड पर अपन को वोल्ट फोर्स यानी इंड्यूस ईएमएफ फोर्स पावर और एक हमको निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी इज द स्पीड एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा और ये रॉड एक फिक्स स्पीड से नीचे गिरेगी तब अपन बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी रीच होगी और अपन को उस केस में स्पीड की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जैसे जैसे रॉड की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगा, तो एक टाइम पे इक्विलिब्रियम तो आना ही है. नाउ वी नो द नेट फोर्स इज गिवन बाय ma, सो वी हैव a इज इक्वल टू g माइनस ILB बाय m. इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे a इज इक्वल टू g माइनस I इज EMF by resistance. The motional EMF is given by BLV by resistance L into B by M. So what we get is A dV dt is equal to G minus B square L square V by RM. Now what we want to find the value of V, because जब अपने पास V का वैल्यू होगा तभी अपन EMF निकाल पाएंगे, करंट निकाल पाएंगे, पावर वगैरह सब चीज़. हमको V और T में रिलेशन चाहिए. सो इसके लिए हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत बड़ी सी क्वांटिटी है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर एम. ये कांस्टेंट है, सो लेट दैट कांस्टेंट बी के. सो यहाँ पे अपन एक अजम्पशन ले रहे हैं कि डी वी डी टी इज इक्वल टू, लेट कर रहा है, अजम्पशन तो नहीं बोलना चाहिए, तो के वी, वेयर के इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर एम. b की वैल्यू अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है. b की वैल्यू है 4, सो 4 स्क्वायर इज 16, l स्क्वायर इज 25 इंटू 25 इंटू 10 raised to minus 4 because it is in centimeter. r is 10 and mass of the rod is 20 grams, so we will convert in kilogram. Now it is we will do the calculation. So 16 into 25 into 25 into 10 raised to minus 4 divided by 200 into 10 raised to minus 3, that is 2 into 10 raised to minus 1. 16, 8, 8 into 25, 200, 200 into 25, 5000 into 10 raised to minus 3, so that is 5. So the value of k is 5. Now we have the value of k, g is 10, so we will substitute the value. Now dv upon 10 minus 5v is equal to dt. When we perform the integration, we will get log 10 minus 5v 1 by 5 minus is equal to t plus c. Now in order to find the value of constant c, when t is equal to 0, v is also 0. So place t equal to 0 and v equal to 0. What we will get is 1 by minus 5 log 10 equal to c.
ना अपने पास सी का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू अपन बैक सब्सटीट्यूट कर लेंगे और फिर क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगेन एक चीज़ है कि वंस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ v, दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। सो द की इज द रिलेशन बिटवीन v एंड t। सो बैक सब्सटीट्यूट करने पे वी विल गेट -1/5 log 10 - 5v is equal to t -1/5 log 10. So the value of t is equal to 1/5 minus -1/5 log 10 - 5v 10 - 5v plus 1/5 log 10. We can write, we can taking 1/5 as common, -1/5 as common, we will get log m minus log n formula, that is log 10 minus 5v by 10. We can write it as -5t is equal to log 10 minus 5v upon 10. So it can be written as e raised to minus 5t is equal to 10 minus 5v by 10. So v is equal to 10 minus 10 into e raised to minus 5t by 5. So the value of v we got is v is equal to 2, 1 minus e raised to minus 5t. Now the options are that at t equal to 0, t equal to 0.2, we have to find the value of EMF. So first find the value of speed. At t equal to 0.2, speed is 2 into 1 minus e raised to minus 5 into 0.2. 0.2 into 5 is 1, and we have been given the value of e raised to minus 1, which is 0.4. So 2 into 1 minus 0.4, which is 1.2. So we got the value of v. Now the EMF is BLV. So B is equal to 4, L is 25 into 10 raised to minus 2, and V we found 1.2. Now this value is 1, so B into L is 1. So we have 1.2 volt. So the option P will connect to third part. So option P will connect to third part. Now we have to find the value of force. So force is equal to ILB, which is BI equal to BLV by R into LB. LB equal to 1, LB equal to 1, so V by R, and V is equal to 1.2 and R is 10, so 0.12 Newton is the force. Now the power, so power is equal to force times velocity. Force is 0.12 and velocity is 1.2, so it is 0.14. So force power is 0.14 watt, and the terminal velocity, that is the final velocity at t is equal to infinity. So when we put the t equal to infinity in the formula here, if we put the value of t equal to infinity, what we will get, v is equal to 2. So terminal velocity is 2. Looking at these value, it is clear that the magnitude of force is, as we have found it, magnitude of force is 0.12 and the power is 0.14 and the terminal velocity is 5. So P is connected to 3 and Q is connected to 4. This is the option D as required answer. Thank you.